Welcome to today's session of Writers and Readers Cafe. आज हमारी नशिस्त जो है वो उमर शाहिद हामिद साहब के साथ है, जो एक नॉवेलिस्ट हैं, और उनके जो नॉवेल्स हैं वो ऐसा लगता है कि हक़ाइक़ ही उनकी बुनियाद हैं। उनके प्लॉट जो हैं वो भी उन्हीं हक़ाइक़ पर हमारी तारीख़ से जुड़े हुए हैं। उनके साथ बात करने के लिए आएंगी सफ़ीना दानिश इलाही, जो एक शायरा हैं, इंग्लिश में शायरी करती हैं, और एक राइटर हैं, और इसके साथ साथ एक पब्लिशर भी हैं। उनका तफसीली तारुफ हम अपने ग्रुप में करवा चुके हैं और मज़ीद करवाएंगे अपने मीडिया के ज़रिए। और हमारे साथ उनके साथ एक और जो हमारी मेज़बान हैं वो हैं आयशा मियां, डॉक्टर आयशा मियां, जो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, एक साइकियाट्रिस्ट हैं, और मेरा ख्याल है एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत बाहर का भी तजुर्बा रखती हैं और यहाँ का भी। तो मैं दावत देती हूँ आयशा मियां को, डॉक्टर आयशा मियां, सफीना दानिश इलाही और डॉक्टर नहीं है वो, उमर शाहिद हामिद, जिनकी किताब भी यहाँ पे मौजूद है, और अगर चाहें आप लोग खरीदना तो वो मौजूद होगी, और 1500 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। Assalamu alaikum everyone. Thank you for being here. मैंने सोचा था कि मैं इनका विकीपीडिया से या किताब के पीछे से तारुफ करूं, मगर वो काफ़ी लंबा है। उमर ने बोला कि ज़रूरत नहीं है कोई हम ऐसे ही शुरू कर लेंगे। आज की डिस्कशन इज़ नॉट अबाउट जस्ट betrayal. The novel, Umar has written many other novels as well and has had a very illustrious career as a policeman, as a police officer. तो शुरू करें सवाल जवाब डायरेक्टली, या फिर would you like to add something? How you know you said you'd like to? पहले तो मैं ये सोच रही थी कि उमर बहुत लकी है। हमारा पहला सवाल तो उनसे ये होना चाहिए कि how does it feel flanked by two women जिनको बुलाया गया है आपसे सवाल जवाब करने के लिए, a special occasion. So how does that work? एक साइकियाट्रिस्ट है, दूसरी पब्लिशर है, तो सोच समझ के आपको बड़े सोच समझ के जवाब आपकी प्रिस्क्रिप्शन में पब्लिश कर दूंगी। बहुत सोच समझ के चलना। परफेक्ट। मेरा जो आई थिंक इंट्रोडक्शन उमर से दोस्त और अहबाब के बीच में हुआ, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही नामी गिरामी ऑथर तो ये हैं, बट ऑल्सो आई थिंक जो भी इनके साथ कॉन्वर्सेशंस होती हैं, गुफ्तगू होती हैं दोस्तों के साथ और सबके साथ मिलके, दे टेंड टू बी वेरी थॉटफुल। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको मेजर्ड थॉटफुल रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड कि जब उमर बात करते हैं तो आपको हर तरफ से सोच समझ के एक बैलेंस्ड किस्म की कम्युनिकेशन होती है। सो आई रियली एंजॉयड दैट। इनको मैं आई थिंक पिछले 4-5 महीने से आई बीन थ्रेटनिंग हिम एज वेल कि मिल के बात करनी है इनसे, जो कि इनको लगता है कि मैं साइको एनालाइज करने वाली हूँ। तो चूंकि इन्होंने मुझे वक्त नहीं दिया, आज आपको मौका तो अब मुझे पब्लिक मौका मिल गया है कि वो गुफ्तगू हो सके। गो अहेड सफीना। आई थिंक शुरुआत ऐसे ही की जाए कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको when did you know that you wanted to be a writer? Because as a child one thinks कि हम author बनेंगे, फिर कुछ हमारा एक बबल होता है कि I think life of an author होती है, but you already have a career, and having that career and finding the time to write, आपको कब लगा कि मैं इसको पेपर पे डालना चाहता हूँ? When did you know you wanted to be a writer? मुझे कभी कभार लगता है कि मैं शायद अभी भी राइटर सॉरी, आप सारों को आवाज़ आ रही? मैं एक्चुअली सफीना, जैसे आप कह रही हैं ना कि
मुझे कभी ऐसा कोई पर्टिकुलर बचपन से शौक नहीं था या ऐसी कोई मेरी एस्पिरेशन नहीं थी कि मैं राइटर बनूं। जैसे आपने कहा, मेरा एक रेगुलर करियर भी था, सब कुछ था। ये एक ऐसी चीज़ है राइटिंग जिस पर मैंने ऑलमोस्ट हादसतन एक्सीडेंटली मेरा इससे एक लगाव हो गया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने राइटिंग शुरू की एक किस्म की कैथार्टिक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पर। एक ज़माना था जिसमें मैं अपने करियर की बड़ी फ्रस्ट्रेशंस और उससे बड़ा डिसइल्यूजन था, तो वो राइटिंग जो थी वो शुरू हुई जस्ट एज अ काइंड ऑफ कैथार्टिक एक्सरसाइज। और वो मेरा अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे स्नोबॉल कर जाएगी, और मतलब वो एक जो मैं लिख रहा था वो पहले मैन्यूस्क्रिप्ट बन जाएगी, फिर शाया हो जाएगी, उसके बाद मज़ीद 4 और किताबें शाया हो जाएंगी। सो मैं आज भी इसलिए कहता हूँ कि वो आई ऑलवेज फाइंड कि वो जब मुझे कोई पूछता भी है तो आई स्टिल डोंट कंसिडर कि वो मेरा प्राइमरी करियर है। हाँ, मेरा शौक ज़रूर है, मेरी हॉबी ज़रूर है, एंड इंक्रीजिंगली मेरी एडिक्शन है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ज़िंदगी की जो भी बाकी मसाइल होते हैं उनको लेवल आउट करने के लिए मुझे लिखना बड़ा लाजमी है। So I just wanted to catch up. ये that was the psychiatric. आपने मतलब वो किया ना? बिल्कुल, बिल्कुल. But you know, as you're talking about this, you know, it's cathartic and everything. Tell us a little bit, because I think हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो आए हुए हैं, they you know, writing as a profession. People a lot जो कि मैं देख रही हूँ, there are very very few people that write as a profession, right? A lot of people will have other things that they do, और उसमें फिर then they will say कि हम शौकिया ये भी कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं, but that takes a life of its own and becomes their primary identity. Do you feel now, even though you're saying कि I still feel like an accidental writer, do you feel it has become आपकी primary identity, या फिर it's still sort of maybe just one aspect of you? मुझे नहीं लगता, लेकिन आई सपोज ये जो आप कह रही है ना, परहैप्स बाकी लोग इसको बेहतर जज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है। मुझे लगता है कि जो भी मैं करता हूँ, चाहे मैं पुलिस में हूँ या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो अभी तक मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी। बट आई थिंक मे बी मतलब जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो शायद इसको बेहतर जज कर सकते हैं। वैसे गूगल को लगता है कि आप राइटर हैं, क्योंकि जब आप गूगल करें उमर शाहिद हामिद तो इट्स एज पाकिस्तानी राइटर। I did it before coming here. सरकार को लगता है कि मैं अभी तक सरकारी मुलाजिम हूँ, जिस तरीके से मुझे चिट्ठियां भेजते हैं। And how does this work out for you? How do you balance those two things together then? The balance actually is a very good one and a very necessary one, because उसकी वजह ये कि you know मेरी जो kind of जॉब्स रही हैं प्रोफेशनली पुलिस में, ऑफ्टन वो हाई रिस्क और हाई स्ट्रेस रही हैं। मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में रहा हूँ, या इस तरह की जो हाई प्रोफाइल तफ्तीशें हैं या ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हैंडल की। तो उसमें मैंने जो देखा है कि राइटिंग एक नेचुरल बैलेंस ले आती है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों में होते हैं तो आप एक you know you're kind of full on in it, और आपका पूरा फोकस जो होता है उसी चीज़ में होता है, एंड यू ऑलमोस्ट आप बाकी दुनिया ब्लॉक आउट कर देते हैं। तो वो राइटिंग जो है ना, वो आपको, या मुझे रादर कहना चाहिए, एक बैलेंस प्रोवाइड करती है कि जब आपको उस काइंड ऑफ ककून या उस काइंड ऑफ हाई प्रेशर एनवायरनमेंट से निकलना हो और अपने इमोशंस और अपनी काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस बैलेंस करनी हो, so writing works as a perfect. And what doesn't work for you real life में? Let's say you're part of a case या कोई तफ्तीश that doesn't go, जिसका end result doesn't go the way you want it to be. Are you able to shift that in your writing and make it work out in your writing to help feel better about it, or help get sort of catharsis around I it? wouldn't say that I shift that into my writing. हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
फ़ायदा ये होता है कि आपको चाहे कोई अच्छे एक्सपीरियंस हो या बुरे एक्सपीरियंस हो प्रोफेशनली, you can always take something out of it and put it into your writing subsequently. Right. But does it feel more controlled? Your writing world feels more controlled than your real world? It gives the real world provides a lot of inspiration and ideas, and I think to an extent that the writing, the ability to play with those ideas, उनके साथ खेलना, उनको ऊपर नीचे करना, उनको अडेप्ट करना, वो yes आप बिल्कुल कह सकते हैं कि that does give you a sense of control. Yes. Actually, that was going to be, it segues into my question, which was कि life और fiction कोई muddle ज़्यादा नहीं हो जाती? Do you feel like अपने experiences जो, as a writer, people do write what they know, मगर कहीं पे आपको ऐसे लगता है कि कोई असल कैरेक्टर आपकी बुक में आ गया है और कल को कोई आपको आके बोले कि आपने हमारे बारे में लिख दिया है, so where does sort of life, there's a demarcation between your experiences and when it turns into fiction. तो वहाँ पे आपको कैसे लगता है कि merge कैसे होती है? So जब मैंने राइटिंग शुरू की, जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी, Oh, I'm so sorry. Is that it? जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी तो I was not an experienced writer. मैंने किसी किस्म की मेरी क्रिएटिव राइटिंग की ट्रेनिंग नहीं है ना, फॉर दैट मैटर मैंने जिस तरह होता है ना कि लोग स्कूल में बड़ा लिखते थे, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता था. तो फॉर मी एज ए नॉविस राइटर it was easier to take bits and pieces, characters especially, from my professional life and mold them into fictional characters. So मतलब not necessarily कि आपने एक शख्स के ऊपर एक पूरा कैरेक्टर बनाया, लेकिन अक्सर आपने कुछ दो असल इंडिविजुअल ले लिए और उनको उनके कैरेक्टर्स मोल्ड करके एक वो बना लिया, things like that. तो वो and especially when you are starting out, it's easier to do it that way because हमेशा आप राइटिंग में कहते हैं write what you know, and it's a bit like that कि you kind of you come from a certain world and उसी दुनिया के बारे में आप लिखते हो और उसी से आप कैरेक्टर्स ड्रॉ ऑन करते हो, एंड ऑब्वियसली वहाँ बहुत डिबेट जनरेट होता है कि ये आया कि ये is it based on, are these stories based on reality or not, and fundamentally of course they're fiction, but of course you draw inspiration from that. But I think as I've gone on, और स्पेशली मुझे फील होता है खास तौर पर विद लेटर बुक्स ऑफ माइन कि जब आपको जब आप थोड़े सीजन हो जाते हैं एज अ राइटर एंड यू हैव दिस ग्रेटर एबिलिटी टू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स, क्योंकि आपका इतना तजर्बा हो जाता है, यू काइंड ऑफ आर एबल टू ड्रॉ ऑन द स्किल्स दैट यू हैव लर्नड, तो वो फिर आपकी रिलायंस ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑन योर काइंड ऑफ ऑन व्हाट यू नो, वो कम होता जाता है. सो यू स्टार्ट मूविंग अवे, एंड आई ऑल्सो एंजॉय इट बिकॉज आई ट्राई एंड चेंज व्हाट आई राइट अबाउट. मतलब मैं मसलन शुरू में मैंने जो पहली 3 किताबें लिखी वो बहुत ज्यादा कराची सेंट्रिक थी, यानी कि कराची की सियासत, कराची की पुलिसिंग, ये वो उस पर बेस्ड थी. बट सब्सिक्वेंटली I have tried to move away from that because I find that now writing about something that I don't know that much about, actually researching it, learning about it, looking at it from the point of view of a writer is a very gratifying experience. No, and it's very humble of you to say that you stumbled upon writing or ये आपने सोचा नहीं था. सच है. Very humble because I've read your work and I feel like it's very systematic. ऐसे लगता नहीं है कि chaotic कुछ thoughts किसी ने डाल दिए हैं कागज पर. And I also feel like your writing is very plot driven. काफी you know that there's like this arc going on and then it moves forward. Have you ever felt the pressure after your books being a success कि अब वो next किताब जब आएगी तो वो एक certain इससे बेहतर होनी चाहिए, and do you feel like ability versus expectation, मतलब कुछ आपको ऐसी फीलिंग होती है कि अब मैं एक ब्लॉकबस्टर और कैसे डिलीवर करूं अपनी ऑडियंस को?
आई फील कि जो मैंने हर किताब लिखी है ना वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन द प्रिजनर टू जो मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट अभी ख़त्म की है कुछ हफ्ते पहले, हर किताब इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, राइट? तो आप यू गो यू ट्रेन योरसेल्फ एज अ राइटर, आप यू कीप गेटिंग बेटर। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग ए गुड स्टोरी टेलर, हर किताब में एक अपवर्ड एवोल्यूशन आया है। अब whether or not that translates into commercial success is obviously something, you know, people will enjoy different books for different reasons. वो उनकी वो होती। So far, touchwood, I've been very lucky कि by and large मेरे ख्याल से जो पांचों मेरी किताबें हैं, they have also been commercial successes. So you know, it's worked for me so far. But I feel that there's an improvement in each book. And do you feel from that question that, and I'm really sorry you're having to shift, turn and yeah, back and forth and back and forth. With this कि आप जैसे you know you feel कि हर किताब में बेहतरी आई है और हर किताब में वो आया है. Is that because you act, and this is I'm asking because you know there are lots of people that I feel record bhi ho raha hai, sab ho raha hai, lots of younger people that want to write as well. Do you look at how you can improve your, is that part of your process, how this writing can improve? I've written a book, I could have done this better, so next May I'll you know try to learn sort of more skill based things. Yeah, is it just something that's एक तो आपका नेचुरल, यू नो, आप कोई भी चीज करो, व्हेन यू कीप डूइंग इट तो आप यू कीप इंप्रूविंग इट, राइट? आप यू होन योर स्किल्स, एंड ऑफ कोर्स आप जब आप व्हेन यू गॉट अ बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड यू, देन you tend to be more self critical कि नहीं यार, ये इसको ना फलाने चीज को बयान करने का बेहतर तरीका जो है वो ये हो सकता है। So वो आप ऑटोमेटिकली अपनी एक you become a better editor in many ways। जब आप थोड़ा सा मतलब you know when you've written a few books you become a better editor of yourself। you have a better sense of the tone that you want to set, you know, कि आप किस टोन में या किस उसमें आप किताब को या उस कैरेक्टर को आगे ले जाना चाहते हैं। तो वो that comes from experience. So yeah, it's and it becomes more fun because you know you kind of can play with it, you can kind of push yourself to be a little bit better. Right. And a little bit of what you know Safinah was also saying in terms of you know writing, you know, having a favorite book or writing better or writing you know कि इससे next वाली जो है वो बेहतर है या होगी, and आप pressure feel करते हो कि नहीं करते? Do you not feel the pressure because you have your primary identity or job otherwise and this is not your primary identity? Good question. Maybe because मैंने आज तक जो है वो like I say, मैं बार बार यही कहता हूँ कि I consider myself a storyteller. I consider this to be a hobby. So maybe I don't feel that pressure. Maybe it's because I've been lucky enough that I haven't really had a sort of commercial failure, commercial or critical failure as a book. So I don't feel that yet. हो सकता है कल हो वो, because you know writing उस लिहाज से is a tough business, and Safinah जो कि खुद writer भी हैं और publisher भी हैं, वो she'll bear me out because it's cutthroat. You know, you're only as good as your last book, and मैं हमेशा कहता हूँ कि it's a bit like being a writer is a bit like being a politician कि आप you sort of put yourself out there and saying this is what I have to offer, and then really it is जिसे कहते हैं ना जो अवाम की आवाज है कि whether they buy that or they don't buy it, right? आप whatever you're selling to them, तो वो so it can be very nerve wracking, and yeah, it's a tough business. And how does that work being a writer in Pakistan? A tougher business, right? Because overall वो reading का जो एक culture था वो खत्म होता चला जा रहा है, और you know people are not really buying as many books or reading as many books as they
used to a certain point, or unless you feel different? No, I think I mean, I don't think that uh, people are. I think there's a lot of interest out there. Lekin I feel that perhaps people, or it appears as if people are reading less or whatever, because I feel sometimes लोगों को जो right सही किस्म के जो डिलीवरी सिस्टम्स है ना रीडिंग के हवाले से, वो उस तरीके से हमारे नहीं इवॉल्व हुए हुए। पब्लिशिंग इंडस्ट्री अगर आप देख लो पाकिस्तान में, या बुक शॉप्स देख लो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस तरीके से नहीं है। ऑफ कोर्स यू नो जैसे जैसे कंपीटिंग मीडियम्स आ जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, व्हाटएवर, यस इट्स टफर, लेकिन राइटिंग और बुक्स एक ऐसी चीज रही है कि देखिए ना, बुक्स हैव गॉन थ्रू दिस ट्रांजिशन। मतलब जब रेडियो आया, जब काइंड ऑफ टीवी आया, तो एंड बुक्स सर्वाइव्ड ऑल दैट, राइट, ओवर years or millennia of evolution. Books survive that, right? So ऐसी, so they don't really go away, but उसका proviso ये कि जो infrastructure है to kind of promote reading, to kind of make it part of our lives, वो अपनी मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कभी भी लंदन में सुबह अंडरग्राउंड पर सफर करें, तो हाँ, मतलब 10 में से 8 लोग जो होंगे ना, वो या ई बुक पर, या फिजिकल बुक पर, या ऑडिबल बुक पर किताब पढ़ रहे हैं, राइट? Which shows that again, places like that have a infrastructure that supports reading, and वो unfortunately हमारा for whatever reasons we've not been able to maintain or create that infrastructure, और या जो कहना चाहिए जो था वो भी। So what stops people over here from carrying a book and reading on the bus and reading on the ask the publisher? Tell us about this infrastructure. मैं तो I was going to ask कि आप बताएं कि क्यों? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। What is that infrastructure? I mean, I feel like when people ask me why my kids weren't reading, मेरे पास जवाब नहीं था, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आप सब्जी बच्चे के सामने खाएं तो बच्चा भी सब्जी खाएगा, किताबें घर में रखें तो बच्चा भी किताब पढ़ेगा। इट वॉजंट हैपनिंग, बट देन एट एन एयरपोर्ट माई 14-year-old picked up a book, fell in love with it and continued reading after that. I remember reading since I was 8. वो भी बड़ा लेट था, आई थिंक, बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी वाज रीडिंग। अच्छी एक कूल बात होती थी, स्वीट वैलीज होती थी उस जमाने में, द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ व्हाटएवर, तो वो हम पढ़ते थे। और फिर पूरी जिंदगी आज तक, इफ आई डोंट हैव अ बुक दैट आई एम रीडिंग, अजीब सी कैफियत होती है कि जैसे लाइक आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ये कैसे नहीं है मेरे साथ। मगर आई थिंक हमारे बच्चों के जो ब्रेन्स अभी डेवलप हो रहे हैं, वो 2 साल में ही आईपैड्स के साथ हो रहे हैं। एंड आई ऑलवेज से दैट, एंड आई हैव बीन अ टीचर एज वेल, सो आई थिंक दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। फौरन बटन दबाया और म्यूजिक भी आ गया और तस्वीरें भी आ गई, और वो एक क्वाइट सेटिंग में जिसमें आप बैठ के किताबें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जब आप किताब पढ़ते हैं, फिर आप किताब को डिस्कस करते हैं, फिर आप किताब के बारे में, उस डिस्कशन के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। तो दीज इवेंट्स आई ऑलवेज से येस टू। मुझे कोई बुलाए बात करने को, बैठने को, मैं ज़रूर जाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक इट्स फ्यूलिंग माई ब्रेन। और हमारे बच्चों को शायद, जैसे उमर ने बोला, ऐसी गैदरिंग्स नहीं मिल पा रही हैं। बच्चों के बुक क्लब्स मैंने कभी नहीं सुने यहाँ पे। बुक स्टोर्स भी लिमिटेड हैं बहुत, 1-2 चेन्स हैं पाकिस्तान में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स नहीं हैं, हमारे मार्जिन्स बहुत कम हैं। हम जब किताब छापते हैं यहाँ पे, आई नो एटलीस्ट 2 more publishers sitting here, हमें बचता बहुत कम है। सो व्हाई वुड यू गेट इनटू अ बिजनेस वेयर देयर इज सच लिमिटेड प्रॉफिट और लॉस, या बहुत कम प्रॉफिट है या लॉस है। तो हम कम छाप रहे हैं, हम कम स्टोरीज ले रहे हैं। आई हैव एटलीस्ट 50 emails a day telling me that I'm a writer and I have a story and I have written this. Magar sadly I have to say that, why do you want to tell this story? First tell me who your audience is. And that's what my publisher in the UK also asked me, that okay, tell me what your comps are, tell me what your audience is, tell me what your Instagram presence is. तो वो अब दुनिया चेंज हो रही है,
एंड उसके साथ साथ जैसे ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, वो सब कुछ साथ साथ चेंज हो रही हैं, बट कल्चर, यहाँ का रीडिंग कल्चर चेंज नहीं हुआ. So we need to, as parents, as educators, as publishers and buyers and distributors and shop owners, हर कोई effort करेगा, because the form that this is storytelling. जिंदगी में from the unknown times बैठ के लोग कहानियां सुनाते थे. So I don't want to hog the mic, so I'll just get back to Omar. उमर, कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर आपने लिखा जिसमें you felt stumped, you said कि ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, that people will not believe that I am Alina Khan or I am somebody from one of your books? Funny you should ask that. जैसे हम बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पर जो मेरी अर्लियर बुक्स थी उनमें बहुत से ऐसे कैरेक्टर थे, क्योंकि व्हाट आई वाज राइटिंग अबाउट और जो कैरेक्टर्स भी थे वो काफ़ी हद तक मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से लिंक थे, या मुझे अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस की वजह से उन चीज़ों में या उन कैरेक्टर्स में इंसाइट थी. And then as I moved on, it became more challenging. For instance, जब मैंने अपनी चौथी किताब लिखी द फिक्स, तो वो it's about women's cricket in Pakistan and match fixing in women's cricket, and again to kind of understand what it would feel like to be a woman cricketer in Pakistan, and on top of that, to be a woman cricketer who is faced with these pressures of match fixing and bookies और ये जो इस किस्म की criminal दुनिया है, that was challenging, and because again it's something जिसका आपको it's something you'd have to really work on to get a feel for it, ना, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में obviously I had not been a woman cricketer. Do you play cricket too? I do. Okay. I do. But इस मुल्क में अगर आप women's cricket और men's cricket की बात करें, मतलब it's two different worlds. So that I thought was very challenging and interesting, because I think it helped me to grow as a writer. And abhi balki I finished a book and I was just in the last couple of weeks मैं कुछ दोस्तों से ये बात कर रहा था अगले टॉपिक के ऊपर, और मैं बड़े अरसे से एक किताब लिखना चाह रहा हूँ जिसका कोई ना कोई जिसका ताल्लुक या उसकी काइंड ऑफ लूज इंस्पिरेशन जो है वो एक केस से है जो पाकिस्तान का अभी तक मेरे ख्याल से वाहिद और दुनिया का सबसे प्रोलिफिक सीरियल किलर है, जो कि आपने शायद याद होगा या नहीं होगा, जावेद इकबाल एक शख्स था लाहौर में, and he which I didn't know until I started researching this. हाँ, I haven't seen the film. And I was not inspired to write the book by the film. मैं इसको काफी अरसे से सोच रहा था, बट उसको लिखने में अब मतलब as I research it and मैं जो उस जमाने के तफ्तीशी हैं लाहौर में उनसे भी बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सी इस पर मटीरियल भी, लेकिन उसको लिखने में जो मुझे मेंटली दिक्कत पेश आ रही है वो ये है कि I almost it's scary कि मतलब अगर आप ऐसी शख्सियत के हवाले से लिखना शुरू करो जो who is obviously he has problems to say the very least, right? That's a very scary road to go down. And this मुझसे बात करनी पड़ेगी आपको. Absolutely. We segue to you on this. So it's almost scary. It's almost, I was discussing it with my wife, it's a very interesting topic. Right. But it's almost कि मैं नहीं चाहता कि मैं अगले कोई साल भर या जो भी हूँ इसमें immerse हूँ, because it's very disturbing. Yeah. It's extremely disturbing. So, and you have to think as that character. Exactly. Exactly. When you're writing the character, you have to kind of
it's not like You have to embody I haven't it. seen the movie, but जो उसकी निकली है, but जो कुछ लोगों ने उसके बारे में जो criticism कह लें आया है, वो यही है कि जी वो उसमें कोई deep dive या कोई ज़्यादा उस तरीके से नहीं है. लेकिन जब आप उस ऐसे टॉपिक के बारे में किताब लिखोगे, you have to, right? No, of Because you course. have to आपने create that सोचना है कि character. ये इंसान सुबह उठ के अपनी कॉफी Exactly. कैसे पीता होगा. Exactly. You know, इसकी कौन से quirks होंगे, क्योंकि he's, you know, obviously disturbed and he's not. And at some level, you also have to humanize that person. Huh? Exactly. You You have make to him show believable as a character. And you always क्या get two हुआ है, sides, and especially like, when you know, it's writing. I always- feel like Absolutely. पता नहीं adaptations में different, which is going to be my next question. But I think writing में आप हमेशा एक bad character को भी हमेशा you have to give, because I don't think there's any human who has no positive side. I mean, kahin deep down, you know, there has to be. If you want your writing to be three-dimensional, तो you have to, right? Because आप obviously आप उनके caricatures तो नहीं बना रहे हैं. So you have to kind of look at it in that way, and that's the scary bit कि जब आप ऐसा character लिखोगे तो आपको at some level उससे empathize भी करना पड़ेगा. It's exactly what we are taught when we are doing mental health, that every patient that comes to you, चाहे आप जेल में जाके pedophile को देख रहे हैं या किसी murderer को देख, otherwise you're judge and jury, and you know then it doesn't really work. It's not real. Tell us about you as a person and growing up as a child. I was not like Javed Iqbal. You were not. So was reading always a part of your gambit? Like, is that something that you enjoyed? Or was writing something that you enjoyed? Yes, so reading was definitely something that I've done for as long as I remember. And I was always one of those children जो के अपनी उम्र से बड़ी किताबें पढ़ रहे थे, and just because I found it interesting. Writing, जैसे मैंने कहा कि writing was never something that I did or aspired to, but reading and because I think anyone जो भी कोई किताबें पढ़ता है या जिसकी आदत है, उनका जो बेसिक एक्सपीरियंस है या जो बेसिक उनका इश्क है रीडिंग से, वो यही है कि वो आपको जब आप एक किताब खोलते हो तो वो किताब जो है वो आपको दुनिया के हर कोने में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो, ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाती है वेयर इट्स you can just kind of dream and be a different person or be in a different world. So that was always, reading was a big passion for me, always. And do you feel that reading and then writing makes you a better person? Yes, I think. I find that so interesting. I'd really like to see what you have to say about No, it. I'll tell you why. I think Maybe we should ask that question over there. reading gives you a perspective that a global perspective that you will otherwise never have. अभी recently मैं न्यूयॉर्क में था और मेरी एक पुरानी कॉलीग थी, and I was meeting with her, और हम यही बात कर रहे थे. She works in the world of cryptocurrency, and वो मुझे ये समझाने की कोशिश करी थी, imagine कि ये लोग जो ये काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वेरियस क्रिप्टो करेंसीज चलाने वाले लोग हैं, या who come up with them are the people who've kind of never really read a book in their life. They've always had or looked at the world with blinkers on, they've been coders or whatever. तो उनके जो काइंड ऑफ जो आपको दुनिया आपकी खुल जाती है ना, if you've read literature and these were her exact words. So she said, imagine someone who's never read literature, who's never really kind of followed current events or anything like that, और उस शख्स को आप $1 billion पकड़ा दें कि भाई ये आप इसके साथ खेलते रहो, right? So उसका moral impact क्या होगा? So I think that's where the reading aspect of it comes in. कि the more widely read you are, I think it gives you a certain moral perspective, and I think perhaps a lot of times जो हम बहुत सी चीज़ों में कहते हैं जो हमें even
करंट डे में जो issues फेस हो रहे हैं at a national level, it's often because of a lack. I think when you come to writing, certainly writing kind of what I have found is that it makes you a much better observer of everything around. You know, I personally feel that I became a better police officer after I became a writer, because I became a far more observant. I became far more observant in my professional duties. I kind of was able to take a step back like a writer does and say, okay, you know, what does this actually mean? What are the sort of nuances of any given situation? Right. So that's why I feel that it does make you I would like it makes to- you a more yeah. rounded person. Yeah, I think that makes I that think is a I'd better like to person as well. add that, you know, I don't know if it makes you a good person, but it helps you learn and unlearn. You know, so every character that I've written or read, I've been a little bit of that character for that, you know, for that period of time. I've stayed with the character, and it's almost like, okay, I understand. Yeah. I got you, you know, like I understand who you Right. are and why you did this. And maybe in your position, I wouldn't have done it, but I know what this was about, you know. So let me ask you a question. Do you feel as a writer that you can write yourself as a character? I don't think I would do justice to it because I have a very specific lens of what I think of myself. But when I look at other characters or characters I'm writing, I'm able You can be to. more objective. I can, I think. And see facets of you, because हमारे तो बहुत blinkers होते हैं ना. There are things that we don't know about us. Also, the beliefs that So- one person holds. You know, if I think this particular thing is right, on the page I am going to be like, no, but this is right. I am not going to challenge that notion. मैं ये नहीं बोलूँगी कि हो सकता है ये गलत हो within the story. But when my character is doing something, उनकी आप 3 dimensions ज़्यादा देखते हैं. You know, that's why I guess memoir writing is a completely different sort of ball game from fiction writing. क्योंकि उसमें फिर आपको अपनी स्टोरी भी बतानी है और कुछ different Or facets one भी would argue बतानी that many memoirs are fiction. है. Could be. Unless somebody खास else तौर is पे पाकिस्तान में. unless somebody else is writing a biography about you, then it could be, you know, partly non-fiction. Yeah. Interesting. Interesting. Are you ever going to change the genre of what you write, you feel? I think I do change it. You know, I feel that obviously most writers feel comfortable कि जब वो एक genre में आ जाते हैं तो वो फिर उसकी repetition करते हैं. लेकिन I find that it improves me as a writer because every time that you change your genre, you it's a new challenge. No? So, you know, the first 3 books I wrote were fundamentally crime thrillers. Right. The book on match fixing was a totally different sort of book. I wrote a sort of spy thriller, which was again different from a crime thriller. जो मैंने अभी किताब खत्म की है manuscript, वो totally फर्क है. That's satire. So I like to keep changing it because it keeps me on my toes. Okay. And who are some of your favorite authors? Good question. So growing up, actually, I didn't read a lot of fiction. Balki I have to admit that I started reading more fiction after I became a writer. और ख़ास तौर पर before becoming a writer, जो हमारी kind of South Asian fiction थी, वो मैंने शायद बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी. After becoming a writer, I felt नहीं है, कुछ ना कुछ पता तो होना चाहिए क्या है क्या नहीं है. So I kind of so I always read a lot of non-fiction, and I've always appreciated writers, whether non-fiction or fiction, who are able to create an environment that is totally immersive. You know, ताकि जब आप उनकी किताब पढ़ रहे हो तो आप you are totally kind of आपको पता है, you feel as if you're in that room. You know, अगर आप sort of 9/11 के बारे में कोई किताब पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि आप सदर बुश के साथ सिचुएशन रूम में बैठे हुए हैं, या आप अगर यू नो मारियो पूजो की द गॉडफादर पढ़ रहे हो तो आपको लगता है, यू नो, यू कैन ऑलमोस्ट smell the sort of tomato sauce that
that the sort of gangsters are cooking, and because you really get that feel, you're that immersed in a book. So for me, that has always been the litmus test, even for my own books. Okay, whatever I write, does it feel to a reader as if he or she has kind of been totally immersed in that while they're reading that book, or is it something they can plug out from? Because if you can plug out from it, then it means that perhaps you haven't really been able to hit the notes that you wanted to hit. Okay. You still haven't told us about your favorite authors, or you don't want to no, name them? no. So it's sort of it's a difficult question. It's a very difficult question. and also it's one of those things that at different points in your life you kind of like different authors, right? You're reading different stuff, but I've always kind of, I'm not one of those. I remember a colleague, fellow writer, good friend. मैं उसका एक दफा एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसको किसी ने यही सवाल पूछा, तो उसने कोई 4 रशियन राइटर्स के नाम लिए जो कि मैं कभी उनका नाम सुना भी नहीं, और मुझे बाद में गूगल करना पड़ा कि अच्छा यार ये हाँ ठीक है. I was not like that. Largely, my favorite writers are kind of people who do a lot of commercial fiction, right? Sure. And as I said, the litmus test being that if they have an immersive quality to them, to people like Robert Harris, Mario Puzo का मैंने नाम पहले भी लिया, those sorts of writers. Right. So John Le Carre. Yeah. There's an international debate regarding writing the not self. तो अभी मतलब वर्ल्ड वाइड सब ये बोल रहे हैं कि एक नॉन वाइट पर्सन वाइट वॉइस लिख सकता है कि नहीं लिख सकता. अगर एक वाइट इंसान है तो वो कोई अफ्रीकन voice, can they portray that voice, can they be someone they're not, and are they doing justice to the voice? Is it, and then there's cultural appropriation, so there's a lot there. तो आपको ये लगता है कि आप किसी point पे you are able to, for example, write about a woman a Chinese woman living in, I don't know, the US or in South Korea or now in Pakistan. Or in Pakistan, I mean, they wouldn't, but So that's a very interesting question, because I can see both sides of the argument. I can see that obviously अगर आप उसको बिल्कुल restrict कर दें, that you only write what you know, फिर तो आप कुछ भी नहीं, फिर आप वही लिखना होगा जो आप करते हैं ना. तो but at the same time, no doubt, let's say a white American author writing about the experiences of I don't know, like a black slave who made the journey from Africa or something like that, it does kind of take up the point कि आया कि वो, can you get to the nuances? No matter how much research no matter how much research you do, क्या आप उसकी nuances पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते. लेकिन मैं इसको दूसरी तरीके से भी देखूं. देखिए ना, this debate has come up with respect to a lot of, well, all sorts of writing, but a lot, especially literary fiction, right? Yeah. लेकिन अभी तक ये कोई नहीं कह रहा कि जो थ्रिलर राइटर हैं, जो लेट्स से सीरियल किलर्स के बारे में लिखते हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा कि यार आप कल्चरल एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं. पेपर ऑन दिस, और मैंने ये लिखा था कि if you are writing about a serial killer, you have to be a serial killer. Exactly. You need that pre-qualification. But again, coming back to what you said कि ये जो अगर एक slave है, even so, I was recently in Iowa and we had different writers from different countries. उसमें एक Caribbean writer थी, so she would always be like, do you feel it? And I'm like, what? And she's like, the waitress? I'm like, yes. She's like, she came to you first. And I'm like, because I was on the left. So, so I was just thinking that because she has been treated in a certain manner, there was another writer from Zimbabwe, she said, उन्होंने हमें बोला कि you have to carry your passports in case the police comes for a check. And it's Iowa, nobody checks anything, But I was just thinking that I would have never thought that these writers who are at the same, and I'm still brown. I mean, they're people from Czech Republic and Germany or whatever. But uska jo experience hai,
जो वो इन छोटी छोटी चीज़ों से पिकअप करती है, that's completely different from how I would read the room. You know, वो मैं सोच ही नहीं सकती कि how I am going to be in her shoes. So I feel like I do agree, you know, to a certain extent कि आप नहीं शायद लिख पाए, मगर then what if this person in Palestine who has no access to, you know, I mean, they can't really get their voice across to, for example, us, you know, or any reader in the world. फिर उनकी story कौन सुनाए, you know? Yeah. So there are two sides to that coin as well, I feel. I mean, आप अगर पाकिस्तान में ले लें, like, you know, if you were to write about somebody who's, you know, in another province, yeah, you know, grew up in abject poverty, and, you know, somebody says, but how would you know? Exactly. I mean, where do you draw that line, right? Where do you draw that line? Exactly. So, you know, हर level पे कोई ना कोई कह सकता है कि आपका experience तो ये बिल्कुल भी नहीं है. And I guess, you know, for writers, having that sort of writer's humility of कि अगर ये नहीं पता तो who am I going and talking to kind of get to know उनका essence, उनके लोग, उनके साथ जाके हम रह रहे हैं, कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. But, you know, stuff that maybe anthropologists do, but writers also do. Sometimes they go and live in that, always, you know. yeah. And I would say that, you know, again, taking up that point, कि if you are a writer who is writing about something जिसका आपको उस तरीके से नहीं है, जैसे आपने ना जो आपने example दिया, you better do a, you know, I think it's almost आप पर ये लाजिम है कि you work doubly hard. It's a lot of Right? responsibility. And I think a lot of times what you do find is lazy writing. So there will be kind of cultural appropriation where जो जिसने लिखा है उसने कहा ठीक है, एक सरसरी किस्म का आपने बता दिया कि अच्छा, you know, ये था बहुत गुर्बत थी, you know, so you can't like generalize when you're in somebody else's shoes. You have to show, and it's that thing, showing versus telling as well, right? Yeah. Sorry, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ मैं उसमें craft में चली जाती हूँ. No, this is actually a very interesting point again, because for instance मैंने you know this जो मैंने अभी manuscript खत्म की है, so it's a book about elections, and it's a book about an election in, half of the book is based in the US, about an election in the US, and half of it is based in Pakistan and in a Pakistani political context. तो वो obviously जाहिर बात है आधी किताब अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स या अमेरिकन इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही हो, you must have an understanding, and you know the same issue crops up. And perhaps, you know, one of the sort of ways that I tried or have tried to kind of work around it is to insert characters that have, let's say, a desi background, okay, into that situation, so that they come from a certain degree of cultural familiarity when they're telling that tale, but they're inserted into so you experiment more with location rather than you know internal characteristics of a person belonging to a certain culture and color. So far. Wait, part of this is ये तो पूरा जावेद इकबाल के बारे पे पता चलेगा कितनी cultural appropriation होती है. But you know, it's पूरा एक माहौल इतना ज़्यादा वो political correctness का हो गया है that no matter what you do and how you spin it, and अगर किसी ने आपको कहीं पे कोई चीज लेके पकड़ना है तो and I feel like फिर आप मतलब what happens to creativity, right? Exactly. I mean, if you're policing yourself so much, then how are you even writing a story कि वो ये भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं बोल सकते, you know, ये भी नहीं होना चाहिए इसके साथ because that's not correct, you know. And we've read stuff like Lolita, you know, which is, I mean, अब अगर निकली होती तो वो तो cancel हो जाते, you know. So there was literature before which was quite questionable. But I think there has to be a certain level of leniency in tolerance, writing. And you know, yes, there is a thing of going too far on sort of. So then tell me this question, because I guess you're a good person to ask this question. जो इन्होंने अभी रोल डाल की जो किताबें हैं बच्चों की सारी, वो जो है उन्होंने बैन शैन कर दी उसको, या नहीं उसको चेंज कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने फैक्ट बोला है लोगों को तो ये बोला है and बच्चे can't be using those words, so they're actually changing the script before republishing them. उसकी आपकी writing. So how would you feel 30 years from now if somebody is like looking at your books and saying कि ये जो लिखा था ये बिल्कुल politically correct नहीं था तो हम आपके writing को change कर रहे हैं, you know, republishing. अगर वो आज से 30 साल बाद मुझे उसकी royalties देते रहे तो फिर सही तो जैसे मर्जी change कर
Fair enough. Fair enough. It's just an interesting space. This kind of thought. Actually, I had a question about overall. We had started talking about कि हमारे पास infrastructure नहीं है, ये नहीं है. I do feel हमारे यहाँ पे बहुत सारे मर्द हज़रात हैं और वो है, but it's like as we think about a culture of reading and writing and book clubs and cafes and reading cafes या book cafes जो कि नहीं है पाकिस्तान में. जैसे if I think about it, वो जो we would romanticize the 1960s of Paris और वो वाला, या फिर even पाकिस्तान के जब हमारे इंडिया पाकिस्तान में बैठते थे सब it's like चाय खानों पे बैठ रहे हैं और किताबें, वो चीज़ खत्म होती जा रही है. I feel that women still will sit down and talk about अपने घरों में कुछ book club start कर लेंगे, वो कर लेंगे, but amongst the men it feels like it's not I'm trying not to use it's not a very attractive thing to do. No, I think you're absolutely right, because मैंने in the years since I've been writing, जहाँ भी कोई initiatives मैंने देखे हैं ना of these sorts of things, book clubs, discussion groups, sort of those ideas have always come from women, and sadly men are kind of certainly in my experience, हो सकता है कि ऐसा वो हो, लेकिन वो हमारे उसमें ये बनता जा रहा है. It seems as if वो शायद एक perception बनती जा रही है कि women do it because women have more time or whatever, and men claim not to do it because कहते नहीं जी हमारे पास क्या टाइम, फजूल सी चीज़ है किताबें पढ़ना और उसके बारे में डिस्कशन ग्रुप करना है, तो फजूल सी चीज़ है हमारे पास की बात. Right, or a non-women, like whatever, unmanly thing to do, or would be fiction. Like whenever you ask a man, they'll be like, but I read non-fiction. Right. Because I want to know about the world, while women are just in their fantasies. हम biographies पढ़ते हैं, हम New York Times पढ़ते हैं, New Yorker पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, but we're not going to do that. It's interesting कि 2-3 साल पहले मैं एक डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड में था, तो वो they were doing recruitment to various government organizations. So I was one of the interview board members. So obviously जो भी नौजवान आ रहे थे, they had passed their whatever written tests and all that. So the interview was kind of done to see how they are. So मैं उनको हमेशा ये सवाल पूछता था कि do you read? तो वो to please the interviewer, everyone would respond yes, and then when you would ask after that कि अच्छा क्या आप पढ़ते हैं, तो आधे लोग उसमें कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाते थे. लेकिन there came a trend कि people started saying, and a number of interviewees said हाँ जी हमारी फेवरेट किताब है The Alchemist by पाउलो कोएलो. मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ. तो मेरे साथ जो बाकी मेंबर्स थे, सीनियर, मुझसे ज्यादा सीनियर, मैंने कहा देखिए बड़ी बात है कि पाउलो कोएलो की जो है मतलब बड़ी उसकी बड़ी मतलब चल रही है. उन्होंने कहा ये चल नहीं रही है, वो पहला निकला है, तो उसने जाकर कहा कि ये अंदर ये सवाल पूछ रहे हैं, तो सारों ने एक किताब रख ली है, तो इसलिए तुम्हें बार बार पाउलो कोएलो मिल रहा है. It does not reflect Paulo Coelho's popularity or otherwise. But I just find it interesting because हमारे I think शायर हजरात तो फिर भी मिलते हैं. The men will come together, अपनी जो उर्दू शायरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कल्चर है और वो बरकरार रखा गया. लेकिन जो इंग्लिश राइटिंग के हमारे जो मेल ऑथर्स हैं, somehow that's not a thing. Not just authors but also readers, where they would come together and kind of have some of. I think उसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ये था कि जहाँ तक इंग्लिश राइटर्स की बात आती है ना, तो जो जिसको मैं कहता हूँ like the kind of first generation of Pakistani writers who were writing in English, when they kind of came on the scene or whatever, so most of them were based abroad. Right. So I suppose कि उस टाइम पर starting from शायद the late 1980s कह लो या जो भी अब जिस तरह कह लें, whether it was हनीफ कुरैशी और मोहसिन हामिद और कामला शमसी, those writers were based abroad. So perhaps जब तक
आपके लिटरेरी फेस्टिवल्स वगैरह का रिवाज नहीं शुरू हुआ, आई सपोज देयर वाज आल्सो यू नो अ काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम. जहां तक शायरी की बात है तो यू नो एवरीवन इज हियर, राइट? सो वो महफिल भी हो सकती है, मुशायरे भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश राइटिंग का शायद ये थोड़ा सा वो था, दिस वाज व्हाट हेल्ड इट बैक for many years. Just the accessibility of being able to get to those writers. Having said that, now I think you find a lot more writers who are locally based and kind of trying to come up with manuscripts and publishing books and also. अब the question is that अब इस तरह का माहौल जो है वो बढ़ना चाहिए और कैसे प्रमोट. हाँ, but then it comes to what we talked about, what the relevant infrastructure. Right. अब आपके पास writers भी हैं, तो आप कोई ना कोई उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें या यू नो वो करें where you can kind of have these sorts of discussions. Absolutely. I think you should open it up to the audience. So आप जैसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं. माइक दे दीजिए. Thank you for this enlightening discussion. I wanted to go first because my question is a bit of a disappointment from you as a writer. So I wanted to bring the critical part here because it has. आप मुझ में disappointed हैं या मैं आप में disappointed? No, I'll explain it. I share a background with you as I come from law enforcement. Now I'm teaching creative writing at a university. So there is a whole tradition of men from law enforcement background writing thrillers. It starts from Ian Fleming, Arthur Conan Doyle. It goes through Graham Greene. You know, it reaches its crescendo with John Le Carre. And even in Pakistan, in Urdu, there was a Punjab police official, you might not have heard of him, Malik Saftariyat, who wrote his Urdu stories, and he was a very popular writer. So when I heard that serving police officer is writing novels, and somebody asked me, what is he writing? I said, thrillers. I just guessed it, and it turned out to be true. And then I kept following your novels, and all of them, because I teach writing, the macro genre is thriller. So the question that even Dr. Ayesha asked, that whether you would veer into the other genres, like, and I don't mean that within that same macro genre, like philosophy or like sci-fi. And when you were describing your favorite authors, I also got a hint because I was expecting, you know, like Tolstoy, Dostoevsky or those names to come up, but you immediately clarified that those are not there. So भाई टोल्स्टॉय और डोस्टोएव्स्की दो रशियन हैं जिनको मैं जानता हूँ, तीसरे का नाम मुझे नहीं पता. I hope you have heard of Chekhov then. 50-50. Okay. So my question was this, that whenever I have been following your books, I have always found that you kind of go into that comfort zone of, you know, it's a police procedure coming along, thriller coming along. So would we in the future see a book which is devoid of all this, going completely, you know, off base to a different genre? Because as a teacher, when I am teaching to my students, I always teach them to experiment like this, and I expect them to go into creative like this. But unfortunately, when it comes to ex-law enforcement officials going into writing, it has been a, you know, stereotype that everyone has followed to the T. So मैं ये कहूँगा कि आई थिंक दैट ये होपफुली जब जो मैंने अभी मैन्यूस्क्रिप्ट ख़त्म की है, जब वो शाया होगी तो आप यू विल फाइंड दैट दैट्स टोटली डिफरेंट. दूसरा ये कि आई विल से दिस दैट यस, एडमिटेडली कि अगर आप उसको एक अम्ब्रेला में देखें तो एक ही जॉनरा वो बनता है, लेकिन उसमें जो काइंड ऑफ सब जॉनरा है, अब मसलन बिट्रेयल जो है वो एक स्पाई थ्रिलर है, और स्पाई थ्रिलर की जो काइंड ऑफ टोन और केडेंस है वो बहुत फर्क होती है फ्रॉम अ काइंड ऑफ क्राइम नोआर थ्रिलर जो कि जिस तरह द प्रिजनर हो गया या द पार्टी वर्कर हो गया. तो मैं समझता हूं कि देयर इज यू नो विद इन, ठीक है, एक्सेप्टेड कि वो अम्ब्रेला शायद एक ही हो, लेकिन एंड स्पेशली काइंड ऑफ यू नो अगर आप जाते हैं सॉर्ट ऑफ इफ यू look at it in an international perspective, to crime thrillers and let's say spy thrillers or whatever are very very different genres, right? So मतलब अगर आप किसी बुक स्टोर में भी जाएं तो एक की किताबें एक शेल्फ, मतलब उनकी शेल्फ्स भी को आपस में करीब नहीं होती. So I do think that there is that, but I feel that this जो ये नई मैंने किताब खत्म की है
उसमें आपको गालिब लगेगा, बिकॉज दैट्स अ टोटल रिमूवल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी, any sort of that thing at all. It's more satirical. It's political satire. So वो उसमें you'll be able to better judge in with that one. बिल्कुल. अभी तो जल्दी डिसअपॉइंट थोड़ा सा वेट कर ये अभी हाँ अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ये जो पॉइंट जिस पर आपकी डिस्कशन हो रही थी कि कितना हम किसी और के शूज़ में जाकर उसके कैरेक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे हमारी पूरी इंग्लिश राइटिंग जो फिक्शन राइटिंग है पाकिस्तान में इतनी एलीट है, तो क्या आपके ख्याल में इंग्लिश राइटर्स ने कुछ कोशिश की है कि यू नो टू अंडरस्टैंड द अदर क्लासेस और यू नो poor people have nots के उसमें गए हैं किसी डोमेन में या नहीं है? मतलब मुझे बहुत ही आर्टिफिशियल लगती हैं बस चीज़ें, यू नो, जैसे कि जब वो बात होती है गरीबों की और उनकी, एक तो आप अपने पर्सनली भी बता सकते हैं और ये कि ओवरऑल आपका क्या इंप्रेशन है सारी, और क्या हम उस पर क्या वर्डिक्ट देंगे, एक तरह से हम कैसे पूछ सकते हैं? मैं इस पे कहूँगा कि आपकी येस एंड नो इस हवाले से कि जब मैं पाकिस्तानी जो राइटिंग है अंग्रेजी ज़बान में उसको देखता हूँ वो एज अ बॉडी ऑफ वर्क, तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सी ट्रांजिशन आई है, राइट। ट्रांजिशन यूं आई कि अगेन जैसे मैं दूसरे सवाल में भी आयशा से बात कर रहा था कि जो उसके काइंड ऑफ पायनियर्स थे जिन्होंने ये ज्यादा शुरू किया, एज यू नो बाय डिंट ऑफ सर्कमस्टांस, जो भी वो था इनिशियली वो ऐसे राइटर्स थे जो कि बेस थे पाकिस्तान से बाहर और वो पाकिस्तान के बारे में लिख रहे थे। ऑफ्टन टाइम्स जो लिख रहे थे वो एक किस्म का वो था ऑफ द पाकिस्तान दे लेफ्ट बिहाइंड और व्हाटएवर, जो भी उनके मोहसिन हामिद, मैंने मोहसिन हामिद का नाम लिया या कामिला शमसी या हनीफ कुरैशी, इवन मोहम्मद हनीफ जब उन्होंने अपनी पहली एक आध किताब लिखी तो वो पाकिस्तान में उस टाइम नहीं थे। सो वो एक काइंड ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग था और शायद उन राइटर्स के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो एक काइंड ऑफ यू नो वही जो हम बात कर रहे थे राइटिंग व्हाट यू नो, तो दे वर इन दैट स्पेस ऑफ राइटिंग अबाउट लॉस और राइटिंग अबाउट यू नो जो पाकिस्तान था और जो चले गए और व्हाटएवर और देयर एक्सपीरियंसेस इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, राइट। एंड उसके बाद और उसकी वजह एक प्रैक्टिकल वजह भी थी। प्रैक्टिकल वजह ये थी कि उस जमाने में क्योंकि उस टाइम तक खासतौर पर आपकी इंडियन पब्लिशिंग इतनी नहीं खुली थी, तो आपकी ज्यादातर जो किताबें थी या अमेरिकन या यूके बेस्ड पब्लिशर्स शाया करते थे। सो ऑब्वियसली उनकी जो एक रेलेवेंस या उनकी जो वो थी टू पिक अप राइटिंग अबाउट प्योरली अबाउट पाकिस्तान, वो शायद इतनी नहीं होती थी। जब आपकी 2000s ऑनवर्ड से इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री एक्सप्लोड की और ऑल ओवर सडन वहां पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया कि पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता, तो बहुत से राइटर्स को अपॉर्चुनिटी मिली लिखने की। तो अगर आप काइंड ऑफ 2008 ऑनवर्ड से देखें तो ये बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई और वो एक्सपेंशन उन राइटर्स में हुई जो पाकिस्तान बेस्ड थे, और जो पाकिस्तान बेस्ड हैं वो गालिबन जाहिर बात है जो प्योरली पाकिस्तान रिलेटेड या जो लोकल रिलेटेड थीम्स हैं उस पर ज्यादा लिखते हैं। अब उन पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, हर आदमी का अपना नजरिया है कि आया कि जो यहाँ के बेस्ड राइटर्स हैं उन्होंने इस बात को उनकी राइटिंग एलिटिस्ट है या नहीं है। आई कांट रियली यू नो मतलब आई डोंट फील दैट, बिकॉज इसमें हमेशा होता है कि बंदा जनरलाइज करता है। मतलब मैं समझूंगा कि मेरी राइटिंग तो बिल्कुल उस तरीके से एलिटिस्ट नहीं है। जो भी मेरी ज्यादातर इंटरेक्शंस हुई हैं लोगों से जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं वो भी बल्कि वो कहते ये हैं कि उस मेरी राइटिंग जो एक की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो बहुत रियलिस्टिक या यू नो ग्रिटी है उस तरीके से। सो उसमें मैं कह नहीं सकता, बट
you know it's not necessarily कि वो elitist, मतलब हम जब general I'd बात like करें. to add something as well. एक तो पहले जब आपने एलीट बोला तो उसमें जाहिर है कि एक बंदे की जो कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है उसने एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन ली होगी तो वो इंग्लिश में लिख सकते हैं. वैसे ही वी आर क्रिटिसाइज्ड कि ये इंग्लिश में सोचते नहीं है तो जब ये लिखते हैं तो वो ट्रांसलेशन लगती है. So there's a lot of criticism that we face as well. Saying that my book is my own novel is about class structures. So I see other people also experimenting with different characters and different classes in their story. अब मेरी जो एक character है वो एक maid की बेटी है who lives a middle class life, जो एक गांव से आती हैं. उनकी क्या, again that's the thing, right? जिसने one has to give credit to the writers that there are many writers and there's a lot of work that is unread, I guess. तो कोशिश तो कर रहे हैं. मतलब मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तानी राइटिंग इन इंग्लिश है ना वो बड़ी अभी भी इट्स एट अ वेरी यंग एज, इट्स स्टिल डेवलपिंग एंड ऑब्वियसली जिनका उस तरीके से एडवांटेज है वो था वो पहले उसमें आए. तो ये आई थिंक आपको नजर आएगा ओवर द नेक्स्ट this rather I should say that this will be determined over the next few years कि आया कि ये elitist है या नहीं है और whether the portfolio expands. तो आपके ख्याल में इन किताबों की ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, उर्दू ट्रांसलेशंस, क्योंकि हमारी जो यानी एक तो ये है कि अगर हमारी इंग्लिश जो मेरा मतलब ये है कि जो नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं क्या वो उर्दू रीडिंग पब्लिक को जो उर्दू रीडर्स को क्या आपके ख्याल में इतना इंटरेस्ट करेंगे कि वो उसको ट्रांसलेट करें और क्या उनकी मतलब सेल होगी या वैसे तो खैर सेल बहुत कम होती है. ये अच्छा सवाल है. मेरी किताब जो है उर्दू में ट्रांसलेट होने वाली है, उसकी सेल्स थोड़ी पता चल जाएगा हमें कि हम अरबपति बनेंगे या नहीं बनेंगे. हाँ, अगर हम बन गए तो फिर जाहिर बात है उसकी मार्केट थी. मगर ये भी है कि उर्दू में हो के चीजें फिर बैन भी हो जाती हैं क्योंकि वो सारी बातें जो हम इंग्लिश में कर रहे हैं ये भी है. वो जो है ना वो एटलीस्ट टॉलरेंस शायद उस रीडरशिप में होती है. और उर्दू में जाके जब मैंने हनीम से कहा कि आप कुछ अल्फाज लिख दें उमर की नॉवेल के लिए फॉर द ब्लॉग, तो उन्होंने कहा, हंसने लगे, कहने हाँ मैं क्या लिखूं कि मेरी किताब तो उमर के बहुत कोशिश के बावजूद वापस नहीं हुई लेकिन उमर की किताब छप रही है. तो खैर मेरा सवाल इस पर था कि आपने रिसेंटली एक बहुत गट रेंचिंग पीस लिखा है, माय रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, एंड आई थॉट मे बी आयशा वुड मेंशन इट. I had said that I would, and I thought that maybe Ayesha somebody else. नहीं भूल नहीं गई. I felt वो बिल्कुल किसी और उसमें I'm not talking about the shorter version. Yeah, the long version. But वो what made you write it, and is it going to be a part of some other thing, or was it just? नहीं, it was a part of. Someone reached out to me. Someone who was coming up with an anthology of articles or these things from Pakistani writers about their relationship with Pakistan. तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो आर्टिकल लिखा और जाहिर बात है उसकी जो टाइमिंग ऐसी थी कि जिस पीरियड में हम बड़े एक मुश्किल और काइंड ऑफ हिस्टोरिक किस्म के फेज से गुजर रहे हैं. सो ऑब्वियसली दैट ऑल ऑफ दैट इम्पैक्टेड द राइटिंग ऑफ दैट आर्टिकल एंड आई थिंक उसका काइंड ऑफ एक किस्म का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम सारों को टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट हो रहा है. So Ayesha will have the better. One of the reasons why I actually didn't, I had read it जब मुझे context के लिए जिनको नहीं पता, उमर ने has written an article called My Relationship with Pakistan जिसमें इन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी, अपने लॉसेस के बारे में लिखा है और इनकी जो अपनी रिलेशनशिप है which is love and hate relationship, right? जो कि हम सब I think up to a certain point जब पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं that we can't live without it, we can't live with it,
वो जो हम सब उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं मुल्क के साथ कि क्या हो रहा है, एंड इट्स वेरी हार्ड. सो आई हैड रेड इट एट दैट टाइम, और अभी मैं आते हुए दोबारा से उसको पढ़ रही थी, एंड आई ट्रूली पढ़ते हुए भी, एंड जिसने नहीं पढ़ा, आई डोंट नो इफ देयर इज अ वे कि हम आपको सबको वो आर्टिकल I पहुंचा think सकें. it will get published hopefully next year. Next तो वो year. it will be part of an anthology. तो then it will be more Right. widely available. That needs to be definitely translated, but it leaves everyone, and it left me again in the past 30 minutes feeling, you know, stressed out myself and feeling traumatized myself, because I think इस वक्त जो भी मुल्क को एक हमारी identity है being a Pakistani, I'm very clear that one of my जो भी 2-3 identities है उसमें being a Pakistani woman is a very strong part of, and उसमें जो आप करते हैं कि what is happening to the country at this point, and where are we sitting, and then one of the things जो कि उमर ने उसमें कही है, विच इज़ स्ट्रगल फॉर अ लॉट ऑफ अस, इस कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कॉन्टेक्स्ट छोड़ना चाह रहा हूँ, right? And a lot of us are thinking like that what is the context that we are leaving for our children, what story do we want to tell them, क्या उनकी वही वाबस्तगी होगी इस मुल्क से जो हमारी है, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और उसको किस तरीके से हम और हमारे जो बच्चे जो हम कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान उनके लिए अच्छा नहीं है मुल्क, तो उनको हम बाहर भेजना चाह रहे हैं फ्रॉम एनीवन. हम जब बीच पे जाते हैं तो एक साइट पे अल शहबाज स्टोर है जहाँ पे हम पकौड़ों के लिए रुकते हैं और बर्फ़ लेने के लिए रुकते हैं जब सैंडस्पिट जाते हैं. तो वो शहबाज साहब से, वो बूढ़े हो गए हम अक्सर उनको, तो वो उस दिन मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहिबा मैंने एक बेटे को जर्मनी भेज दिया है पैसे जमा करके, और दूसरे के लिए मैंने 1 करोड़ पता नहीं कैसे जमा कर लिया, उसको मैं पोर्चुगल भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अब उनकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है. तो हम अब वो इलीट की बात है, इलीट से लेके गरीब से लेके लोअर मिडिल इनकम क्लास से लेके हर कोई यही सोच रहा है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें. So I think that is the struggle that he talks about, and especially has written this for your son to read later. So maybe you can. उसने अभी तक नहीं पढ़ा. But yes, it's उस और फॉर यू, जो आप बात कर रहे थे, जो आपने सवाल सबसे पहले पूछा था कि सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्यों लिखते हैं सिर्फ थ्रिलर्स, सो दैट इज नॉट, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट जॉनरा दैट Umar has written in that article. It's a very reflective article. It's again like you said, Ayesha, it's a very tough call, and वही बड़ी बात है कि what I kind of try to say in the article is I don't have a definitive answer, and obviously ये जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक सवाल है, एक चॉइस है जो उनके सामने आएगी. और अगर बहुत से ऐसे मुल्कों में जहाँ स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है तो ये शायद ये सवाल काइंड ऑफ नहीं उठता. ये सवाल अमेरिका में नहीं उठता कि मुझे मतलब यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या कनाडा में नहीं उठता, या जापान या चाइना में नहीं उठता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक पूरी जनरेशन होगी, और जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ ये नहीं है ये कि कोई मतलब ये एलिट्स का इशू है या कोई अपर मिडिल क्लास या अपर क्लासेस का इशू है. ये इंक्रीजिंगली सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस जैसे से नीचे जाती उनका भी ये इशू है, क्योंकि हर आदमी, हर शख्स जो है वो अपने बच्चों के लिए खुशहाली चाहता है ना. So it's a question that this generation of our children will have to answer themselves. Absolutely. And maybe it was not a question that we had to answer, but it is a question that they will certainly it is a question that our parents did not have to answer. Perhaps we had to answer it a little bit, but more often than not we answered it in the sort of appropriate way. लेकिन इन बच्चों के लिए ये बड़ा स्टार्क सवाल होगा. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम सर. जी.
फराज, मेरा नाम फराज है, मेरा ताल्लुक भी सिविल सर्विसेज से है 48 कॉमन से। तो कौन से कॉमन से? 48 कॉमन से सर। ये आपने कहना लाजमी था, मुझे अपनी उम्र का आपने मुझे एहसास दिला दिया है। तो आई एम सॉरी सर, बट नहीं मजाक कर रहा हूँ, हुक्म। So when we study, there is a lot of reading involved, especially FESC recommended books भी देता है। तो उसमें what I've realized is my question is related to non-fiction, for politics, for economics. Even on Pakistan, we have to study authors that are usually American authors, जैसे Pakistan a hard country है, Anthony Levin, and other authors. So like there's only one author I've come across, Dr. Ishrat Libab, जिन्होंने भी Governing the Ungovernable लिखी है। So my question डॉक्टर इशरत लिबाद या डॉक्टर इशरत हुसैन? डॉक्टर इशरत हुसैन। डॉक्टर इशरत लिबाद तो पैसे खा के वो दुबई बैठे हैं भाई, वो किताबें नहीं लिखते। So my question was कि like why don't more civil servants come forward? We are actually involved with day-to-day dealings. We are involved with what happens. So why don't more civil servants come forward to write books on non-fiction in the field of politics, in the field of economics, and what suggestion would you give if someone wants to come forward? देखो मैं, हाँ, मेरा इस पर ना थोड़ा सा ये व्यू है कि मैं समझता हूँ, माई सेल्फ ऑब्वियसली बीइंग अ नोटेबल एक्सेप्शन, सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, दे आर बैड राइटर्स। उसकी वजह ये होती है, खैर मैं अपने आप उसमें नहीं गिनता, बिकॉज मैं फिक्शन लिखता हूँ, राइट। सो वो एक फर्क दुनिया है, फर्क जॉनरा है। सिविल सर्वेंट्स मैं इसलिए कहता हूँ बैड राइटर्स होते हैं क्योंकि वो जब जो आपको, मैंने सिर्फ ना 2 किताबें पढ़ी हैं जिसमें किसी किस्म की डिग्री ऑफ सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ क्रिटिसिज्म पाई जाती है, जो कि सिविल सर्वेंट्स ने लिखी है, राइट। अदरवाइज सिविल सर्वेंट्स 25-30 साल नौकरी करते हैं, कहते हैं जी हाँ बड़े हालात खराब थे, वो तो ये था, वो तो, भाई आप क्या कर रहे थे वहां पे, राइट। मतलब 30 साल, मतलब आप एसी से शुरू हुए, फेडरल सेक्रेटरी बन गए, या एएसपी से शुरू हुए आईजी बन गए, आप क्या कर रहे थे? They are memoirs and monuments to self-justification, and they will justify anything, right? And like I said, when you don't bring that level of introspection to your writing, it's also bad writing, frankly speaking. तो सिर्फ एक किसी हद तक ये जो आपका शहाबनामा था, कुदरतुल्लाह शहाब का, शहाब साहब मतलब ने अपनी नौकरी में बड़ा कुछ किया, लेकिन कम से कम उन्होंने उनका जो काइंड ऑफ टोन और डिलीवरी है वो बड़ी अच्छी है। दूसरी, एक पंजाब के आईजी साहब होते थे चौधरी सरदार, जिन्होंने किताब ली, और उनकी किताब इनफैक्ट उर्दू में भी ट्रांसलेटेड है। 2 लोग हैं जो कि जितने भी आपके सामने लोग निकल गए हैं ना सिविल सर्विस में, आप 48वें कॉमन के हैं, यानी कि अब 50वां कॉमन ट्रेनिंग में है, यानी कि 50 साल से जायद के जो सरकारी मुलाजमीन है ना, उनमें से 2 लोग हैं जिन्होंने किसी हद तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बगैर आप किताबें नहीं लिख सकते। मतलब यू कैन राइट लाइक अ वैनिटी पब्लिशिंग आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन यू कांट बी अ सीरियस राइटर। He is a good writer at least. Either way, he's a good writer. As a fellow fiction writer, I will say that at least मैं ये कहता हूँ कि मेरा पॉइंट ये कि अगर आपने झूठ बोलना है तो कम से कम आपकी जो उन्वान हो वो तो अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, मेरा ख्याल है फिक्शन राइटर, खासतौर पर नॉवेलिस्ट, अपने जिस ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ बैठकर लिखता है, जहाँ से कैरेक्टर्स उठाता है, उस मुल्क के हालात कैसे भी हों आते जाते रहते हैं। अभी रशियन राइटर्स का हवाला आया, मगर वो ज़िंदा रखते हैं उस ज़बान को न सही, क्योंकि अब हम अंग्रेज़ी और उर्दू के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उस कल्चर को, उस थॉट को, वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं,
इस सवाल का भी जवाब फिक्शन राइटर ढूंढता है कि यहाँ के लोग ये किरदार कैसे सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो बात है वो ये है कि फिक्शन राइटर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम अलग कर देते हैं। ज़ाती ज़िंदगी में वो कुछ भी सोचता हो, कुछ भी प्लान करता हो, कुछ भी सोचता हो, अमली तौर पर वो कुछ भी करे। लेकिन फिक्शन राइटर की जड़ें ज़मीन में बड़ी गहरी होनी चाहिए। वो अपने लोगों को छोड़ नहीं सकता। मैं भी फिक्शन राइटर हूँ और मेरे भी बच्चे आधे यहाँ हैं आधे बाहर हैं। मुझे जब परेशानी होती है तो मुझे न सिर्फ कराची से पीछे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके सामने ये सवाल है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। मैं उनसे आज़ाद नहीं हो सकती। मैं जब लिखने बैठूं तो मेरे एज राइटर अल्फाज लिखते वक्त और यहाँ बोलते वक्त, किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलते वक्त, मैं कभी भी इस थॉट को सामने नहीं ला सकूंगी कि मेरी जनरेशन को, मेरे बाद वाले मेरे बच्चों को बाहर जाना चाहिए। इस मुल्क में कुछ नहीं है। इस मुल्क में अजाब का ढेर है, मगर वो ढेर में इंसान पड़े हुए हैं। फिक्शन राइटर का फर्ज बनता है कि जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करे, जब वो सफ़ात लिखे, जब वो नॉवेल लिखे, कहानी लिखे, चाहे वो उसका इनर हो। अव्वल तो मैं समझती हूँ कि है ही सारी उसकी इनर जर्नी है जो नॉवेल लिखवाती है। ये शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा जब हम नॉवेल की तरफ आते हैं तो ये उसकी अपनी इनर जर्नी है। लेकिन इस इनर जर्नी में वो खुद को, अपनी ज़ात को भी अगर मरकज़ी किरदार, मेन कैरेक्टर के तौर पर ले आए, लेकिन वह लाखों करोड़ों किरदार जो उसके गिर्द हैं, वो उन्हें खुद में एब्जॉर्ब करके फिर वो लिखता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं सवाल नहीं करती। एज ए फिक्शन राइटर, अभी जैसे इन्होंने एलीट की बात की, मैं वो भी उस बात को भी उस पर बात हो सकती है कि ये एलीट सोच है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करें और जब लिखें तो प्लीज़ याद रखिए ये अल्फाज जो आप बोल रहे हैं, ये अल्फाज जो आप लिख रहे हैं, इसके आपके पीछे अगर आप गर्दन घुमा कर देखें तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों किरदार हैं, इमोशंस हैं, महरूमियाँ हैं, बहुत कुछ है, बहुत एक अजाब है। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम इस वक्त पॉलिटिकल किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे लोग तन्हा हैं, करोड़ों लोग हैं और वो करोड़ों लोग अपने अंदर अलग अलग तन्हा हैं और भटक रहे हैं, हमने छोड़ दिया है। इसलिए किसी भी राइटर को बड़ी उसकी एक कमिटमेंट होती है, उसे बड़ा संभल के ये बात बोलनी चाहिए कि मेरे बच्चों को, अब हमारे बच्चे, मेरे अपने बच्चे आधे बाहर हैं आधे यहाँ हैं, लेकिन पलट कर इसी ज़मीन में आना है। इस ज़मीन पर हम बैठे हैं। इस ज़मीन में हम न सही, हमारे बच्चे न सही, अल्लाह उनको पुरअमन जगहों पर बेशक रहें, हमें दफन होना है, हमारे पेरेंट्स इसमें दफन हैं और हमारे बहुत ही कई प्यारे लोग हैं जो ज़मीन में दफन हैं। तो एक राइटर की कमिटमेंट होती है, आप इस कमिटमेंट को कभी भी ना भूलिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने, कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये बात ना कहें कि यहाँ मेरे बच्चों का यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने ये बात नहीं की, सॉरी मैंने ये बात ऐसी बिल्कुल नहीं की। मैं आपसे मैंने तो ये कहा है, शायद आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा,
मैंने तो ये कहा है कि ये बदकिस्मती से जो भी हालात हैं वो उन्होंने एक काइंड ऑफ ये जो हमारे बच्चों की जनरेशन है ना, हमने तो जो फैसले करने हैं या नहीं करने हैं वो तो हमने कर लिए। और ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो एक बीइंग ए राइटर एंड बीइंग मतलब समवन जिसको हालात वैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हों, उसमें जो किस्म का एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जितनी भी कहानियां हैं और जो भी मतलब एक जब कोई भी कौम या कोई भी मुल्क ऐसे टर्मोइल से गुजरता है तो वहाँ हमेशा एक राइटिंग की एवोल्यूशन होती है। रशियन राइटर्स आप देख लें रशियन रेवोल्यूशन में या इसमें, तो वो मैं समझता हूँ कि हमारा उस किस्म का वो है। लेकिन जहाँ तक जो ये बात हम कर रहे थे, जहाँ तक बच्चों की बात है, मैंने ये कहा कि इट्स नॉट समथिंग मतलब अनफॉर्चुनेटली इनकी इट्स समथिंग दैट दे विल हैव टू चूज। तो मैं उन पर कोई चीज़ ये लागू नहीं कर सकता। ये जो चॉइस है जो कि किसी भी मुल्क या किसी भी कौम में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एक एक्सेप्टेड चॉइस होनी चाहिए ना कि हाँ जी ये हमारा मुल्क है, ये हमारी कौम है, दैट्स इट। तो बदकिस्मती से जो हमारे बच्चों के सामने उनको ये सवाल एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ इस सवाल को कहीं ना कहीं फेस करना होगा। मैंने उसको यही कहा है कि मैंने उसको नहीं कहीं इन्फ्लुएंस किया कि इस तरफ करो या उस तरफ करो, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि ये सवाल हम सारों के बच्चों को फेस करना पड़ेगा। दैट्स अ रियलिटी, मतलब वी कांट कवर दैट अप, दैट्स अ रियलिटी, फेस उनको करना। वो अब उनका क्या जवाब उसका होगा वो शायद जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि एज राइटर आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। क्यों? आई डोंट एग्री मतलब व्हाई इन द सेंस दैट देखिए ये एक हालात हैं जो कि इवॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब एक राइटर के पास इसका जवाब क्यों होना चाहिए? एक राइटर जो है वो यही कोशिश करता है ना कि जो एक तारीख का एक लम्हा है, जो एक ज़ाइटगाइस्ट है, उसको आप एक जरा से उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त में इस ईरा में ये हालात हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट और व्हाई शुड अ राइटर बी एक्सपेक्टेड उसका जवाब हो कि नहीं लेकिन सब कुछ जो है वो सही होगा या नहीं होगा? आप नहीं, वो तो सही नहीं होगा। मैं नहीं कह रही कि वो सही होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक राइटर कनेक्टेड होता है बहुत सी चीज़ों से। आपकी मर्जी है। नहीं मैडम, बिल्कुल मैं आपसे तो बड़े वो कर रहा हूँ ना, आप कह रही हैं कि हम कनेक्टेड नहीं है या क्या? देखिए ओपिनियन जो है ना वो आपका वैलिड ओपिनियन है, बट वी डोंट हैव टू एग्री विद इट, राइट? मतलब दो डिफरेंट ओपिनियंस भी तो हो सकते हैं। मेरा एक सवाल है, हाँ, वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी अंग्रेज़ी भी पढ़ते थे और उर्दू नावल भी पढ़ते थे। खुद मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मैंने भी बहुत इंग्लिश, अभी मैं लेटेस्ट जो मैं बताऊँ कि एक बहुत यंग राइटर की किताब पढ़ के आई हूँ जो पाकिस्तानी है और मुझे बहुत पसंद आई, अमेरिकन फीवर। एक लड़की की है जो इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम के तहत अमेरिका गई है पढ़ने को, और वो दोनों मुल्कों को कंपेयर कर रही अमेरिकन फीवर जो उसकी अब अमेरिकन फीवर, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। उसका एक एक्सपीरियंस था जो उसने बड़ी सच्चाई से लिखा है। हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं कि उर्दू में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि दो तबके बन रहे हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल हर सतह पे, सोशली भी देखें, इकोनॉमिकली भी देखें और ये इंटेलेक्चुअली भी देखें कि दो तबकात बना दिए गए हैं, एक अंग्रेजी का है, एक उर्दू का है। अभी जो हम बहस कर रहे हैं, कुरतुलैन हैदर इन्हीं चीज़ों को लिख चुकी हैं। आग का दरिया हो के आखिर शब के हम सफ़र, यही रोना है कि क्या मुस्तकबिल है, और ये कि हालात हर दौर में ख़राब रहे हैं। उसका आग का दरिया का तो थीम यही है। आखिर शब के हम सफ़र में भी उसके सारे ख्वाब और आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो तहस नहस हो गई हैं। तो वो ये सब कुछ उर्दू नावल में लिखा जा चुका है और बहुत अच्छी तरह लिखा जा चुका है। लेकिन ये जो तबकात बना दिए गए हैं, कभी इस पे गौर किया है कि ऐसा क्यों हुआ है? यानी एक मेरी एज तक तो ठीक है, आमिर हुसैन इंग्लिश में लिखते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि मुझे उर्दू में लिखना चाहिए, तो उन्होंने 50 बरस की उम्र के बाद उर्दू में लिखना शुरू किया और आसानी से लिख लिया।
मगर अब ये हो रहा है कि जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जो उर्दू में लिख रहे हैं वो उर्दू में लिख रहे हैं, जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, जो उर्दू पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, या कोई और जबान, मसलन ये कि जो भी उनकी मादरी जबान है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, ये तबकात क्यों बन गए हैं और इस तबकात को कैसे तोड़ा जा सकता है? खासतौर से आपकी जो जनरेशन है वो अभी कुछ करने के उसमें है, सूरत हाल में। बिल्कुल, मैं मेरा अपना जो मेरी जो थ्योरी है, और हो सकता है इसमें गलत हो, वो ये है कि ये तबकात, जैसे आपने कहा कि एक ऐसा वक्त था जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप अंग्रेजी में लिखें या उर्दू में लिखें, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले थे वो इंटरचेंजेबली पढ़ते थे। लेकिन आई थिंक ये जो गल्फ आ गया वो इस वजह से भी आया कि शायद पिछले मे बी 40-50 सालों में उर्दू लिटरेचर, और खास तौर पर उर्दू पब्लिशिंग, उर्दू लिटरेचर नहीं कहना चाहिए, उर्दू पब्लिशिंग कहना चाहिए, का एक किस्म का जवाल आ गया। एंड उसकी सॉर्ट ऑफ उस तरीके से कोलैप्स हुई कि जितना मटेरियल निकलना चाहिए था या जितना पहले निकलता था उससे नहीं निकल रहा, या उस तरीके से शाया नहीं हो रहा। और वो जब काइंड ऑफ गैप आया तो फिर ये तबकात आने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने कहा अच्छा जी अब चलो हम तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसका तरीका है इसको ओवरटर्न करने का, वो यही है कि एक दोनों किस्म की राइटिंग्स को ब्रिज करने का तरीका ये कि जो बहुत सी इंग्लिश में पाकिस्तानी राइटर्स ने राइटिंग की है उसकी ट्रांसलेशंस की जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन की। लेकिन उसमें जो दूसरा इशू आ जाता है वो हुरी ने भी बयान किया कि जाहिर बात है बहुत कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं जो कि लोगों ने अंग्रेजी राइटिंग में बयान किए हैं, जो कि जब वो उर्दू में ट्रांसलेट होते हैं तो शायद वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो ये हनीफ की किताब का एग्जाम्पल लोगों ने दिया कि जब तक वो अंग्रेजी में शाया हुई तो किसी को कोई मसला नहीं था, 10-12 साल प्रिंट में रही, बड़ी रेगुलर रही, बेस्ट सेलर रही पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। जैसे ही उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन हुई तो उस पर एक किस्म का इशू बन गया। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर ये ब्रिज करना है ना गैप, तो उसका तरीकेकार ये है। और स्टार्ट जो मतलब कंटेंट की जो इंक्रीज आएगा वो यहाँ से कि आप बहुत से जो कंटेंट जो अंग्रेजी में पाकिस्तानियों ने लिखा है ट्रांसलेशंस पर आए। लेकिन आया कि वो अब ये सवाल रहता है कि वो उनमें से कितनी ऐसी किताबें हैं जो कि उस तरीके से मतलब उर्दू में एक्सेप्ट हो जाएंगी या नहीं होंगी। दैट्स क्वेश्चन। होपफुली हाँ कम किताबें होंगी। आई एग्री विद दैट। मैं आपको मतलब FIR जो होती है वो उर्दू में आपको लिख सकता हूँ, उसके आगे जो है ना वो जो उसका दूसरा पेज खत्म होता है तो वो मैं अगर उर्दू में लिखूंगा तो बहुत ही शॉर्ट स्टोरी या पर्चा होगा। मैं दो चीजें हो सकती हैं कि हम मेरा बहुत दिल है कि उर्दू में मैं भी लिख सकूं, मगर एक रीडिंग और राइटिंग में भी ये फर्क होता है कि जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो अगेन कमांड ओवर लैंग्वेज आपकी इतनी ब्रिलियंट होनी चाहिए, उसमें हम जब अपने इंग्लिश के वर्ड्स डाल रहे होंगे तो हमारी उर्दू की किताब तो कोई नहीं पढ़ेगा। वो तो जो उर्दू रीडरशिप भी होती है वो भी एक तरह की किताब पढ़ना चाहते हैं ना। अगर हमारी जबान ही इतनी क्लियर नहीं होगी तो हम असल इशू एक्चुअली ये जो इन्होंने कहा कि एक जमाना था जब इट डिडंट मैटर कि इंटरचेंजेबल था, जो ये इंटरचेंजेबिलिटी खत्म होगी ना मसला उसे है। मैं भी पढ़ने की बात करूं कि मसला जो आया ना वो ये हुआ कि जब आपने पढ़ने में आपके ब्लॉक्स आ गए ना, जब तक पढ़ना जो रीडरशिप थी वो इंटरचेंजेबल थी, वो उर्दू भी पढ़ लेते थे, अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे, डिडंट मेक अ डिफरेंस। रीडरशिप तो आज भी डिफरेंट पर्सन कैन रीड, व्हिच आई वुड अगेन डिसएग्री विद द पॉइंट कि उर्दू का लिटरेचर कम हो गया। उर्दू लिटरेचर नाउ बीइंग पब्लिश्ड इज मोर, इट इज नॉट गेटिंग द रीच टू द क्लास where you are actually studying। तो हम लोगों का वो जो बात उन्होंने की वो उस तबके में चला गया, उसका वॉल्यूम कम नहीं हुआ। You think उसका वॉल्यूम कम नहीं हुआ? We have got now writers who are being published in millions, who are being published in millions. A novel being published in a million is an तो उसकी क्यों नहीं फिर वो हो रही? देखिए ना, अब तो हम एक
सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, ठीक है, यकीनन आप कह सकते हैं कि जी ये मेरी तौर पर मेरी खलल होगी कि जी मुझे इसका नहीं पता। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि उर्दू लिटरेचर इन द सो कॉल्ड मिलियंस पब्लिश हो रहा है, हाउ कम के किसी किस्म की मीडिया पर ये चीज नहीं है? मतलब अगर जो आप कह रहे हैं ये है, तो फिर ये पाकिस्तान का सबसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट, मिलियंस तो नहीं पब्लिश हो रही, राइट? सो बट दैट्स द क्वेश्चन, राइट? 500,000 हम तो कर रहे हैं। जब हम किसी भी उस फोरम पर भी जाते हैं, नहीं हमारे आपकी बात पास बजा होगी 200%, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देन इट्स अ मार्केटिंग प्रॉब्लम ना, क्योंकि जब हम किसी भी उस पर जाते हैं, किसी भी फोरम पर, नहीं, लेकिन देखिए ना, मैंने इसलिए उसका एग्जांपल दिया ना कि चलें अगर मुझे इसका नहीं पता तो आप कह सकते हैं कि ये क्लासिफाई हो गया है। हाउ कम अगर कोई उर्दू में बंदा लिख रहा है जिसकी सेल्स मिलियंस में हो रही हैं, हाउ कम कि जियो या किसी बड़े चैनल पर या सोशल मीडिया पर उसका कोई जिक्र नहीं है? नो, why would it not be important? देखिए ना, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया नहीं, but it's a valid question, right? That if it is being published in the millions, then why? मतलब ये तो आप जो आप बात कर रहे हैं वो तो काइंड ऑफ जो भी मार्केटिंग या मीडिया, सोशल मीडिया के उसके टोटल अगेंस्ट आता है ना। जिस चीज की इतनी वो है मकबूलियत, why should it not be on Jio or on social media? Why not? मतलब आप उनके पेजेस देखें, they have, मतलब मेरा पेज has 1.5 million followers और कोई कंपैरिजन नहीं है 2.1 million followers। वो पॉपुलर फिक्शन है, it is not a literary fiction, that's why it is not being talked about in literature। नहीं, बट देखिए ना, मैं तो कहता हूं ना कि मेरे ऊपर भी यही कहते हैं कि जी मैं लिटरेरी फिक्शन नहीं लिखता, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे ये चीज बट वाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये तो दौर है इसका, मतलब इट्स अ टाइम। वो देखिए ना, जब भी आप किसी उस पर जाते हैं तो हम जब उर्दू फिक्शन की बातें करते हैं तो वो हम उन्हीं पुराने राइटर्स की बातें कर रहे होते हैं हु आर काइंड ऑफ 40-50 इयर्स बिहाइंड, मतलब पीछे के ना। आई हैव नो आइडिया, आप बताएं मुझे। जस्ट क्विक क्वेश्चन आपके पास। अभी बात हुई थी ब्यूरोक्रेट्स की, एक दो और ब्यूरोक्रेट्स जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ, हसन ज़हीर, जिन्होंने बहुत क्रेडिबल किताबें लिखी हैं और बल्कि पूरे मुल्क में डिबेट हो गया था, द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और द पिंडी कंस्पिरेसी, जिसमें उन्होंने मतलब ये खैर ये तो हिस्टोरिकल किताबें लिखी थी लेकिन थी बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे बहुत और हैं जो जैसे आपने कहा वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, झूठ लिखते हैं। लेकिन मैं ये एडमिट करूंगी कि इन लोगों की किताबें मैंने पब्लिश की हैं, और क्योंकि मुझे मालूम था जो उन्होंने लिखा है वो सही नहीं है, लेकिन मैं ये देखती थी कि जब ऐसी कोई किताब आती है तो फौरन एक और ब्यूरोक्रेट उसका रिजॉइंडर लिखते हैं, और तीसरा ब्यूरोक्रेट, अभी अब्दुल बासित की मैंने किताब पब्लिश की हॉस्टिलिटी, फौरन रिजॉइंडर आ गया जिसमें उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज किया। तो इस तरह के 3-4 रिजॉइंडर्स आए तो बीच में से कहीं से सच निकल आता है और वो रीडर्स निकाल लेते हैं 2-3 किताबें पढ़ के। एक और मैं आपकी बात कहना चाहती हूँ जो मेरे ख्याल में आपकी खास एक स्ट्रेंथ है उमर, वो ये है कि आप की जो किताबें हैं वो वेस्टर्न ऑडियंस को आप नहीं एड्रेस कर रहे। आप मेरे ख्याल में बहुत ही जो आपके जो ख्यालात हैं और यहाँ की जो ऑडियंस, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स आती हैं। अभी एक आई थी जो जब मैंने पढ़ी तो बिल्कुल मैंने तो ऑथर से कहा कि देखिए यू आर एड्रेसिंग अ वेस्टर्न ऑडियंस। उन्होंने कहा मेरी किताब वापस दे। वो इतनी नाराज हुई कि उन्होंने वापस ले ली। तो ये एक बहुत कॉमन होती जा रही है कि पीपल आर एड्रेसिंग द वेस्टर्न ऑडियंस इन देयर नॉवेल्स। ये अगेन जो आपने बात की और जो सर बात कर रहे थे ना, ये आई थिंक उसका एक लिंक पॉइंट ये है कि जब भी मैंने कोई किताब लिखी है तो मैंने किसी भी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिखी। मैंने
जो मुझे एज अ स्टोरी टेलर चीज सही लगी। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी जजमेंट इसी पर होती है ना कि आपकी जो एज अ स्टोरी टेलर डज द स्टोरी मेक सेंस, तो वो मतलब वो हर जगह वो पाकिस्तान में वो लोग पढ़ेंगे, चाहे वो उर्दू मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। मसलन मेरी शायद बिट्रेयल जो है, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने तो ऐसी एक जर्मन पब्लिशर को राइट्स दे दी, उसने कहा जी जर्मनी में बड़ी उछल की, हालांकि उसका जर्मनी से कोई ना ताल्लुक ना वास्ता, ना उनकी कोई कल्चरल रेजोनेंस है जी वो। सो मेरा हमेशा ही बिलीव रहा है कि अगर आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी स्ट्रांग हो तो आप यू कैन ट्रांसलेट इनटू एनी लैंग्वेज। Should we wrap up because it's 7:26? I think. Absolutely. Thank you everyone for being here, for being so interactive, passionately so. But it was wonderful to have everyone. Thank you, Meena Appa, for organizing this. Thank you, Fatima and Dr. Tanveer Sahiba. The book is available here, and I think Omar will be happy to sign it for you. Thanks again. Thank you. बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू।